Yes, very good afternoon once more to all of you, right? I am sharing my screen. I ho- I hope my screen is visible to all of you guys. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes. Thank you very much. In the last session, we had completed the unit number 3, that is the engineering curves, right? इंजीनियरिंग कर्व जो यूनिट है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था लास्ट सेशन में, और किसी को कुछ डाउट भी नहीं था, जो भी थे वो हमने क्लियर कर दिए. नाउ इन दिस सेशन आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर और अ न्यू यूनिट. द नेम ऑफ दिस यूनिट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, राइट? I am repeating the name once again, orthographic projection. So before starting this unit, we have to just go through some simple things and just know some fundamentals for the drawings, and then we will continue with this unit, right? So first of all, let's just start with the drawing, right? What is drawing? Drawing is the graphical representation, right? Now, the one fact about this drawing that it is compared with the verbal or written description. The drawings are compared with the verbal or written description. Drawings offer far better idea about any shape, any size, appearance of any object or situation or location, that too in quite a less time. अगर हम वर्बल और रिटर्न डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी बिल्डिंग का, तो आपको समझ में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, अगर ताजमहल का मैं रिटर्न में कुछ लाइंस लिख रहा हूँ, ताजमहल ऐसा दिखता है, उसकी 4 मीनार है, वो व्हाइट कलर का दिखता है, तो अगर किसी ने ताजमहल नहीं देखा है फोटो में, तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा कि ताजमहल एक्चुअली कैसे दिखता होगा, ये रिटन डिस्क्रिप्शन और वर्बल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद. बट अगर वो ताजमहल का ड्राइंग या फोटो देखेगा, तो उसको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा ताजमहल का शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, या फिर कलर मीन अपीरियंस उसका कैसा है, उसकी साइज कैसी है, पतला लग रहा है, मोटा लग रहा है, एग्जैक्ट लग रहा है, हाइट कितनी हो सकती है उसकी, उस ऑब्जेक्ट का जो भी उसकी सिचुएशन है, उसकी लोकेशन है, उसका सारा जो आइडिया है वो हमें एग्जैक्टली तुरंत थोड़े से क्विक टाइम में हमें पता चल जाता है कि कैसा होगा, राइट? अगर वर्बल और रिटन डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बुक में हम पढ़ रहे हैं कि ताजमहल, ताजमहल छोड़ दीजिए, कोई ऐसी एक चीज ले लेते हैं जो आपने नहीं देखी है, सबमरीन अंदर से कैसी दिखती है, उसका रिटन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा. बट अगर उसका अंदर के जो फोटोज होंगे या उसके ड्राइंग्स होंगे वो देखेंगे, तो हमें क्विकली आइडिया आ जाएगा कि अंदर से वो सबमरीन कैसी दिखती है और किस तरीके का उसका शेप है, उसका अपीयरेंस कैसा है, राइट? नाउ अगर उसका हम अगर देखेंगे, तो ड्राइंग इस ये जो फैक्ट है कि उसकी साइज शेप और अपीयरेंस का हमें पता चलता है क्विक टाइमिंग में. बिकॉज ऑफ दैट it is becoming the best media of communication, not only in engineering but almost in all fields. कोई भी फील्ड ले लीजिए, ड्राइंग जो अगर बात करते हैं तो बेस्ट मीडिया बोला जाता है कम्युनिकेशन के लिए. क्यों? ड्राइंग देखे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है, राइट? सो हम अब देखेंगे ड्राइंग में कौन कौन से एग्जैक्टली कितने टाइप्स के ड्राइंग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और कौन कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और कहाँ पे वो सब आते हैं, राइट? सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑफ ऑल सम टाइप्स ऑफ ड्राइंग. सो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ ड्राइंग. The first one is natural drawing, right? Because for example सीनरी है कोई नेचुरल, या लैंडस्केप कोई है जिसका हम ऑलमोस्ट अभी स्क्रीन सेवर रखते हैं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे, या कोई भी नेचुरल ड्राइंग्स जो है जिसमें पेड़ होते हैं, जंगल होता है, नदी होती है, पानी, पत्थर, पहाड़, सनलाइट, वो सब दिखता है अच्छे से, जिसको हम नेचुरल पिक्चर्स बोलते हैं, नेचुरल.
व्यूज, राइट। वो जो है एक टाइप ऑफ ड्राइंग है, राइट। इसको हम लैंडस्केप और सीनरी में उसके एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड टाइप है जियोग्राफिकल ड्राइंग, जिसके अंदर हम मैप्स जो है वो बोल सकते हैं कि मैप जो है वो जियोग्राफिकल ड्राइंग है। फॉर एग्जांपल, हम अगर इंडिया का या फिर एशिया का कोई मैप ले लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ इस जगह पे इंडिया है, इस जगह पे चाइना है, इस जगह पे नेपाल है। ये इस तरीके से हमें तुरंत ही पता चल जाता है। हम अगर बोले इंडिया के ऊपर चाइना है, उसके बीच में नेपाल है, अगर किसी ने मैप नहीं देखा तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो ऊपर क्या है बीच में क्या है। बट अगर किसी ने मैप देखा है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ चाइना यहाँ है, इंडिया यहाँ है, नेपाल यहाँ है, right? So this is also one type of drawing, maps, geographical drawings जिसको हम बोलते हैं, right? The third type of drawing is botanical drawings, right? जिसके अंदर प्लांट के ड्राइंग है, फ्लावर्स के ड्राइंग है, वो सारे आ जाते हैं। फोर्थ टाइप जो बोले जाते हैं जूलॉजिकल ड्राइंग, मीन्स किसी क्रीचर या एनिमल्स के ड्राइंग, जैसे हाथी ले लो, बाघ ले लो, सिंह ले लो, राइट। वो सब के जो ड्राइंग्स है एनिमल ड्राइंग। अगर देखा जाए तो ह्यूमन भी एक टाइप के एनिमल ही है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के जो ड्राइंग है वो भी जूलॉजिकल ड्राइंग ही बोले जाते हैं, राइट। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ड्राइंग। फिफ्थ टाइप ऑफ ड्राइंग इज पोर्ट्रेट, मीन्स ह्यूमन फेसेस या एक्सप्रेशन। हम जो मोनालिसा बोलते हैं, किसी आइंस्टाइन का ड्राइंग है, पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, गांधी जी का हम जो फोटो देखते हैं वो पोर्ट्रेट है, वन टाइप ऑफ पोर्ट्रेट, जिसमें ह्यूमन का फेस है और उसके एक्सप्रेशंस जो है वो दिखते हैं, राइट। मीन्स पासपोर्ट साइज फोटो फ्रेम ऑफ एनी ह्यूमन फेस, ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट। मीन्स द पोर्ट्रेट। एंड द लास्ट टाइप, दैट इज द सिक्स्थ टाइप, इट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अंदर प्रोजेक्शंस आते हैं, राइट। अब हमें अभी बाकी के जो 5 टाइप्स है वो इजीली समझ में आते हैं। हाँ भाई, नेचुरल में तो को लैंडस्केप और सीनरी आती है, जियोग्राफिकल मीन्स मैप, प्लांट्स एंड फ्लावर के लिए बोटानिकल है, जूलॉजिकल में एनिमल्स आ गए और पोर्ट्रेट्स में ह्यूमन फेसेस आ गए। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में कौन कौन से ड्राइंग्स है, किस तरीके से है, लेट्स सी दैट। सो basically, engineering drawings are also divided into further 2 types, that is the building related drawings and machine component drawings, right? कोई भी बिल्डिंग है उसके रिलेटेड ड्राइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल blueprints of any building, that is comes under the building related drawing। एंड अगर हम कोई मशीन है, फॉर एग्जांपल रोबोट है, उसका अगर कंपोनेंट्स इनसाइड के ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं या उसके ब्लूप्रिंट्स निकालते हैं तो उसको हम मशीन कंपोनेंट ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। नाउ अगर उनका देखा जाए तो वो ड्राइंग्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स or 2 ways to draw these 2 types of drawing, the building related and machine component drawing, that is the orthographic projection and isometric projection. This is the 2 unit which we are completing in this semester. The orthographic projection is the unit 4 and the isometric projection, it is unit 5 of our course, right? So now what is the orthographic projection and what is isometric projection? In the orthographic projection, there are a front view, top view and side view of mechanical engineering terms, or the plan elevation of civil engineering terms and working drawings 2D type. Keep your eyes on 2D word. Orthographic projections are the drawing types that are shown exactly with the 2D type of drawing, means only one plane. जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, मीन्स अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है करता है एग्जैक्टली, अगर कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है उसको हम स्केच ड्रॉ करते हैं, उसका साइड व्यू, उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू 2D में, then it is shown known as the orthographic. And
In the isometric, similarly, the actual object drawing, कोई अगर बिल्डिंग की ड्राइंग है तो उसका अगर हमने फोटो ले लिया और उसकी सेम फोटो की कॉपी हमने बनाई 3D में, ऐसा ड्राइंग बना रहे तो हमें 3D लगे वो ड्राइंग, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग, राइट? So the basic difference between isometric and orthographic is 2D and 3D. Orthographic means 2D drawing, isometric is 3D drawing. अगर आपको कोई पूछे कि what is the difference between these two, orthographics and isometric, then you can just tell them that the orthographic projection means convert 3D drawing into 2D. Convert 3D into 2D, it is orthographic. And convert, sorry, I am just making one mistake. I'll just repeat again. The orthographic projection means convert 3D into 2D drawing, and isometric projection means convert 2D into 3D drawing. Means basically orthographic means 2D and isometric means 3D, right? You have to just keep this simple point in your mind that orthographic is 2D and isometric means 3D. Understood, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. सब सो Yes, sir. या अच्छा हुआ। चलो, बोल रहे मीन्स सब सो नहीं गए खाने के बाद अच्छे से, वरना नींद आती है बहुत ही, राइट? चलो, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? इट इज अ टेक्निकल ड्राइंग in which different views and objects are projected on different reference planes, observing the particular to respective reference plane. What is the respective reference plane? So let's see. The different reference planes are: horizontal plane means HP, vertical frontal plane means VP, and side or profile plane means PP. This HP, VP, and PP is a common basic terms you have to keep in mind for this semester. HP means horizontal plane, VP means vertical plane, and PP means profile plane. And the different views are front view, top view, and side view, right? So you have to also keep in mind that FV means front view, TV means top view, and SV means side view, right? So let's see that FV is view projected on VP. फ्रंट व्यू जो है वो वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा, टॉप व्यू जो है वो HP पे दिखेगा, एंड साइड व्यू जो है वो प्रोजेक्टेड होगा PP मींस प्रोफाइल प्लेन, राइट? एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट वन इज प्लेन, कि ऑर्थोग्राफिक में कौन कौन से प्लेन्स आते हैं। सेकंड वन इज पैटर्न ऑफ प्लेन और पैटर्न्स ऑफ व्यूज, एंड थर्ड वन इज मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कौन कौन सी मेथड जो है वो हम यूज करते हैं। लेट्स सी दिस ऑल 3, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज प्लेन. So there are many different types of planes. First types is principal plane, that is HP and VP. जो HP है and VP है वो हमारे principal planes है. HP means horizontal plane and VP means vertical plane. मैंने drawing में भी वो दिखाए है आपको. HP VP, आप अगर कोई आपका ग्राफ है X and Y is vertical, X is horizontal, उसको आप अगर extend करते हैं then it will become a plane, horizontal plane and vertical plane, right? And next type is auxiliary planes, right? अब auxiliary planes में कौन कौन से planes आते हैं? Let's see.
Yes. Sorry guys, due to some electrical problems, लैपटॉप के अंदर से मैं आपका लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ. प्लीज वेट, आई एम जस्ट changing my network. Yes. Yes, students. Thank you very much for waiting. I'll just share my screen again. Okay. Yes, my screen is visible to all of you guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Let's just continue. So, where I am, the auxiliary planes, right? So there are three different auxiliary planes are there. First one is auxiliary vertical plane, that is also known as the AVP, right? I am drawing the view of that auxiliary vertical plane, that is the vertical plane and horizontal plane, and in between that both a auxiliary vertical plane is situated. But keep in mind that auxiliary vertical plane is always perpendicular at the 90° to HP and at some angle to the VP, like this. This angle is we cannot say the angle because it can be anyone, right? Anything other than 90°, right? Now the second auxiliary plane is the auxiliary inclined plane, that also known as the AIP, and it is situated in between vertical and horizontal plane in such a way that it is having HP and exactly, right? The auxiliary vertical is perpendicular to HP and auxiliary inclined plane perpendicular to the VP, right? Now the third plane is the profile plane, and it is placed in between VP and HP in such a way that it is perpendicular to the both HP and VP, like this. Just see these all conditions of auxiliary planes, and if you have any doubts, please ask. चेक कर लीजिए तीनों प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल, ऑक्सिलरी इंक्लाइन एंड प्रोफाइल प्लेन. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यार वाओ, सबको समझ में आ गया, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. Sir, તમારો No, break sir. મારો voice Voice cut. ઓકે ઓકે.
થોડોક નેટવર્ક ઇશ્યુ છે એટલા માટે વોઇસ કટ થઈ રહ્યો છે. I am managing my level best. Cut down this voice. Okay. I think હવે મારો વોઇસ જે છે ક્લિયર આવતો હશે બધાને. Yes, sir. So yes, so there are two different main planes, that is principal plane and auxiliary planes. There are also three subdivision in the auxiliary planes, that is AVP, AIP and PP, profile plane, right? So let's just move forward for the second point, that is pattern of planes and views, right? This first angle method I'll just explain you later, because for that you have to just understand first the pattern of planes, right? So there are three different planes perpendicular to each other, that is VP, HP and profile plane PP, right? So if I am viewing from the right side, means from the front side of vertical plane, then what I will see that the pictorial setup of all these three planes. But in this setup, I'll just able to see the only one plane, that is VP. HP and जो PP plane है वो मेरे exact parallel होंगे, right? सामने के साइड. सो वो दो बोथ प्लेन जो है वो मुझे एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेंगे, राइट? मींस द एरो डायरेक्शन की साइड से हमें देखना है. दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, राइट? सो अगर उस डायरेक्शन में से मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ वीपी प्लेन जो है वो एग्जैक्टली दिखेगा, राइट? जो फ्रंट व्यू जिसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल प्लेन, वो प्लेन ही मुझे दिखेगा. बाकी के अदर प्लेन्स जो है वो मुझे नहीं दिखेंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो एचपी प्लेन जो है उसको 90 डिग्री डाउनवर्ड साइड घुमाएंगे, लाइक दिस, 90 डिग्री डाउनवर्ड साइड. एंड जो प्रोफाइल प्लेन है उसको 90 डिग्री राइट हैंड साइड की डायरेक्शन जो है वहां पे उसको लेके जाएंगे, राइट? सो अगर उसको मैं एग्जैक्टली एचपी को 90 डिग्री घुमाऊंगा तो कैसे दिखेगा? एचपी मुझे एग्जैक्टली वर्टिकल प्लेन की नीचे दिखेगा, राइट? एग्जैक्टली एट द डाउनवर्ड साइड ऑफ वीपी. एंड अगर मैं प्रोफाइल प्लेन जो है उसको अगर 90 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे वो एग्जैक्टली फ्रंट वीपी जो है वर्टिकल प्लेन उसके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे मुझे दिखेगा, राइट? नाउ सो हमें एक ट्राइंगल एल दिखेगा, मींस वीपी उसके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल प्लेन एंड एग्जैक्टली उसके बॉटम साइड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? हमने पहले भी देखा था वीपी में हमें क्या दिखता था? फ्रंट व्यू. एचपी में हमें क्या दिखता था? टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड प्रोफाइल प्लेन में हमें दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वो कैसे दिखते हैं? यस, हम एग्जैक्टली इस तरीके से दिखेंगे सारे, वो देखते हैं नेक्स्ट वीक में. વોઇસ કટ થઈ છે સર. સર તમારો અવાજ નથી આવતો. ओके, सो थोड़ा सा yes, electricity problem, because of that this is problem is occurred, right?
अब अच्छे से आवाज आ रही है मेरी? कट हो हेलो, रही। नो सर। अब मेरी आवाज कट हो अच्छे से आ रही है नो सर। सबको? नो अभी भी कट हो रही है सबको? अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, तो अब आ रही है? अब ठीक है। ओके, अब अच्छे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, राइट? ओके ओके, नो। हम अब देखते हैं एग्जैक्टली फ्रंट व्यू में हमें कैसे दिखेगा और टॉप में कैसे दिखेगा ड्राइंग, एंड साइड व्यू में हमें ड्राइंग किस तरीके से दिखेगा, राइट? So for that I am just taking the third point of drawing, right? There are two different methods for the orthographic projection. First one is the first angle projection method. अगर उसके अंदर हम देखते हैं तो हमारा ड्राइंग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड द सेकंड इज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेसिंग होगा। अब क्वाड्रेंट क्या है वो पहले से हम जानते हैं। देयर आर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? अब उसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट जब प्लेस करते हैं उसकी ड्राइंग और उसके प्रोजेक्शन हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ड्राइंग क्यों नहीं बन सकते और हमारा ऑब्जेक्ट हम प्लेस क्यों नहीं करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा फ्रंट व्यू जो होता है वो एक्स वाई जो प्लेन होता है उसके ओ होता है, एंड टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई प्लेन के बिलो होता है, राइट? लाइक दिस एक्स वाई, अगर आई एम टेकिंग वन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन in the first quadrant my front view is at the top above xy line and my top view is below of xy line. And if I am taking the object in the third quadrant, then my object is having his top view on above xy line and his front view is at the below xy line. This xy line is the ground line standing for horizontal plane, right? Horizontal plane के ऊपर हमें टॉप व्यू दिखेगा थर्ड क्वाड्रेंट में और फ्रंट व्यू। लेट्स अंडरस्टैंड with the help of some drawings, that is हमारे पास क्या था पहले से ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की अगर हम बात करते हैं, देन इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड to be situated in the first quadrant, means above HP and in front of V. And in this projection method, the object is in between. Just a second. Yes. In this projection method, object is in between observer and plane, right? So let's just see this method. If I am taking one object and I want to draw the three views of this object. That is front view of this object. It is the blue shaded region. And second projection is of for top view, and that is the almost sky blue shaded region. That is the top view of my object, and the orange one is the side view of my object, right? Then if I am just placing my plane for this object, then the front view will be represented on the vertical plane like this. I have also shown this here. On the vertical plane, my front view of the object will be seen, and the top view of the object will be visible on the horizontal plane, right? And the side view of my
object will be seen in the profile plane like this, right? So this is the setup of this, the initial setup, right? Vertical plane, horizontal plane, and profile plane. These three planes are set up like this, right? Now let's see the third angle projection. In this method, the planes being transparent and in between observer and object. There are also one difference. The second difference of this projection method, that in the first angle projection, first observer, then object, and then plane, right? But in the third angle projection, first will be observer, second will be plane, and third will be object, right? Now let's see how this will be possible. So I am taking the same object which I have taken for the first angle projection method, that is, and here my HP will be like this, and my top view will be shown on the HP, VP on the VP, the front view, and on the profile plane, my side view of the object. These all processes are same as the first angle method, but what is changed in this both case? You have to just see the difference here. This X and Y ground. This is the one where the difference can be seen, right? I'll just remove all other things, so you can just see the first angle projection. The front view is main. Below the front view, there is the top view, and at the right hand side of this front view, my LHS view, means left hand side view, will be placed. This method, right? Front view, below that the top view, and at the right side, left hand side view. But in the third angle projection, situation will be different. The top view of this projection will be at the top of front view, and my left hand side view of the object is at the left hand side view, right? You just have to understand this change for this both projection methods, that in other words, if I am explained in the other words, then in the third angle projection method, all the views are placed in the right way. Means top view जो है वो top पे ही रहेगा, left hand side view है वो left hand side ही रहेगा, front view वो हमेशा center में. But अगर मैं first angle projection की बात करता हूँ, then सारे views जो है वो reverse हो जाएंगे. Means फ्रंट व्यू तो सेंटर में ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला व्यू जो है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, एंड टॉप व्यू जो है वो बॉटम में चला जाएगा. मीन्स ये जो सारे व्यूज है वो उल्टे हो जाएंगे. मीन्स राइट, थर्ड एंगल में सारे व्यूज एग्जैक्टली उसकी पोजीशन पे ही रहेंगे. टॉप व्यू टॉप लेफ्ट एंड फ्रंट व्यू सेंटर में, बट फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू तो सेंटर में ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड व्यू उल्टा हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड चला जाएगा. टॉप व्यू जो है वो टॉप की जगह पे बॉटम में चला जाएगा. इतना ही डिफरेंस दोनों में है, राइट? ये आपको समझना है. नाउ आगे बढ़ते. आई थिंक अभी भी हमारे पास टाइम है, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फर्दर. सो अगर मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, देन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन these three directions. The direction should be the normal to the respective planes, right? And these planes are front view, vertical plane, horizontal plane, and profile plane. And उसके ऊपर कौन कौन से 3 different views आएंगे? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एंड
राइट। अगर दूसरी बात करते हैं तो फ्रंट व्यू जो है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ही दिखेगा, टॉप व्यू जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही दिखेगा, एंड साइड व्यू जो है वो हमारे प्रोफाइल प्लेन पे ही दिखेगा, राइट। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम थोड़े एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन देखेंगे कैसे कि हम जो ड्राइंग्स है वो किस तरीके से और कैसे ड्राइंग करते हैं, राइट। सो लेट्स टेक वन प्रॉब्लम. Sorry, I'll just skip this one. Let's take one problem. This is the 3D drawing of any object, right? Now I want to draw the orthographic view of this drawing, right? So first of all, I will be observing this object from this direction. So what will be happening? The front view will be seeing like this of this object. Top view will be shown at the bottom side like this, and the side view of this object will be shown like this way, right? So let's just draw the projection of this object on the sketchbook. That you just have to draw one x and y horizontal line, and if I am drawing the first angle projection method, then in the first angle projection method, what will be there? The front view is at the top center, the top view is at the bottom side of this front view, and left hand side view will be the right hand side of the front view, right? So first of all, I will draw the front view like this. अगर मैं यहाँ इस साइड से देख रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी ये जो पिंक शेडेड रीजन जो है मुझे दिखेगा। ये जो सारे रीजन्स है वो एग्जैक्टली एक लाइन की तरह मुझे दिखेंगे, एग्जैक्टली मुझे शोकेस नहीं होंगे फ्रॉम द फ्रंट व्यू, राइट। तो मुझे फ्रंट व्यू में से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा? इस तरीके से एग्जैक्टली, राइट। ये थोड़े स्टेप्स होंगे और इस तरीके का शेप मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा। मैं एग्जैक्टली उसको शेडेड रीजन की तरह कलर करके आपको दिखा रहा हूँ तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से रीजन्स जो है ऑब्जेक्ट के वो फ्रंट व्यू में दिखेंगे। नाउ दिस इज माय फ्रंट व्यू। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं देन हमारा टॉप व्यू जो होगा वो कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली एट द बिलो ऑफ फ्रंट व्यू लाइक दिस। सो अगर हम अब इस ऑब्जेक्ट को अगर टॉप साइड से हम देखेंगे तो हमें कौन कौन से रीजन्स दिखेंगे? एक दिस एल शेप, दिस वन स्टेप एंड दिस द सेकंड स्टेप, राइट। तो हमें इस तरीके से कुछ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप व्यू में से दिखेगा। उसको मैं कलर करके आपको दिखा रहा हूँ तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मुझे ऊपर के साइड से हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं साइड व्यू देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट का तो मुझे कौन कौन से जो व्यूज है ऑब्जेक्ट के वो दिखेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, राइट। मीन्स साइड से अगर व्यू ड्रॉ करते हैं तो हमें इस एल साइज का शेप, ये बोथ दोनों स्टेप जो है वर्टिकल वो दोनों ब्लू शेडेड रीजन्स दिखेंगे। मीन्स ऑब्जेक्ट के तीनों साइड के व्यूज अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। फ्रंट व्यू यहाँ पे, टॉप व्यू यहाँ पे एंड साइड व्यू यहाँ पे। ये हो गया हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका हमने 2D में ड्राइंग किया कन्वर्ट करके। अगर ये ड्राइंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर देता हूँ तो वो यूनिट वाले वहाँ के इंजीनियर्स इस ड्राइंग को रीड करके मुझे एग्जैक्टली ये 3D ऑब्जेक्ट मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकते हैं, राइट। दिस इज एडवांटेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस ड्राइंग की हेल्प से ये जो है वो हम
ड्राइंग का ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, दिस ऑर्थो प्रोजेक्शन जो है ड्राइंग का वो, राइट। सो हमने जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में कन्वर्ट किया, मींस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते थे, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसका 2D ड्राइंग बनाना है, मींस वो साइड फ्रंट व्यू से कैसे दिखेगा, साइड कैसे दिखेगा एंड टॉप से किस तरीके से हमें दिखेगा, राइट। Anyone have any doubts? Yes, please unmute yourself and ask your doubts. यहाँ तक हमने सिर्फ इतना समझा है कि ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो है प्रॉब्लम्स के साथ ड्राइंग करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो यहाँ तक अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम और दिक्कत आ रही है, देन प्लीज आस्क योर डाउट्स। किसी को कुछ डाउट है? हेलो नो सर। सबको मेरी ओके, सबको यस यस સર તમે વિમલ પરમાર સર વાળો ટોપિક કન્ટિન્યુ કર્યો કે બીજો? મેં એક્ઝેક્ટલી ફ્રેશ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરેલું છે, પ્રોજેક્શન ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ, રાઈટ। જે વિમલ સર વાળો જે ટોપિક હતો હું તમને પછી આખો કમ્પ્લીટ કરાવી દઈશ, રાઈટ। ओके सो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। So from the next lecture we are going to draw the different हेलो सर। व्यू, लाइक स्केचबुक पे ड्रॉ करके ही आपको दिखाओ, सो आप हेलो इजीली समझ पाए कि आपको किस तरीके से ड्राइंग करना है, राइट। यस हेलो सर। यस प्लीज, यस यस प्लीज सर स्लाइड 1 बाय 1 करके दिखाया ना, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट में काम, ये जो वीडियो है एग्जैक्टली वो मैं आपको अभी हेलो सर। शेयर कर देता हूँ, तो आप पूरा वीडियो वापस से व्यू देख पाएंगे, राइट। आई विल जस्ट अपलोड द सेम recorded lecture in the YouTube. ओके सर। ओके सर। Okay, so thank you very much for joining. yes आज आपने जो समझाया वो ड्रॉ नहीं करना है ना? नहीं, वो आपको सिर्फ लिखना है, जो टाइप से ड्राइंग के मेथड्स जो हमने लिखाई है वो सब आप लिख लीजिए, ड्रॉ नहीं करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सेम ड्राइंग मैं आपको स्केचबुक में ड्रॉ करके सिखाऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट करने हैं, राइट। ओके सर। ओके सर सो यस यस कैनवास में મને એડ કરી દેજો ને। yes, no problem, I'll just add you in the canvas. What is your name? સિદ્ધાર્થ। Okay, no problem. Just do one thing, send me your email, RKU email ID to my WhatsApp number, so I'll just add you in the canvas course. Okay. ઓકે સર। Okay, thank you very much for joining today.